ओके, स्विच क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद इन लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज डन एट लेयर 2। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फ्रेम को मूव कराना विद इन लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, इसको हम स्विचिंग कहते हैं। दिस इज डन एट लेयर 2। लेयर 2 पे ही होता है, डेटा लिंक लेयर पे। ओके सर। ठीक है, बेसिक ऑफ स्विच वर्क ऑन फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मीन्स टू वे कम्युनिकेशन। ओके सर। बाय डिफॉल्ट ऑल स्विच पोर्ट इज अप एंड अप। जितने भी स्विच के पोर्ट रहते हैं बाय डिफॉल्ट वो अप रहते हैं। दिस इज ओके वन सर। ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ओके, ओके सर। स्विच डज नॉट हैव collision, oh, does not have port 0/0 या 0/0। स्विच पे कोई भी पोर्ट नंबर 0/0 नहीं होता है। ठीक है, ओके सर। स्विच परफॉर्म फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ टेबल। कौन कौन से टेबल है हमारे पास? टाइम टेबल, कंटेंट, एड्रेस टेबल, मेमोरी, मैक टेबल। ओके, स्विच ऑपरेशन। Switch perform some given operation or action to provide device to device communication. Device to ओके device सर। communication। कम्युनिकेशन। ये एड्रेस लर्निंग, सेकंड फॉरवर्डिंग, थर्ड लूप अवॉइडेंस। बाय यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके सर। स्ट्रक्चर ऑफ जो ओके सर। मैक टेबल होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मैक टेबल होता है, यहाँ पे पहले होता है वीलेन। वीलेन नंबर होगा, फिर मैक एड्रेस होगा, फिर टाइप होगा, डायनेमिक है या स्टैटिक है, फिर इंटरफेस। ठीक है, ओके सर। ओके सर। अभी अगर हम जैसे ही एक स्विच लेते हैं यहाँ पे, और इससे हम दो एंड्रॉइड डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे। ओके सर। दो पीसी हमने कनेक्ट कर दिया। अब अगर अभी यहाँ पे हम चेक करें, CLI मोड में जाके इनेबल करके शो मैक टेबल, मैक एड्रेस टेबल, तो सर यहाँ पे किसके क्या ऊपर दे क्या रहा है? करने का था? हाँ, पैकेट ट्रेसर कौन सा का वाला? करना है। ओके सर। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? वीलैन
VLAN नंबर यहाँ पे मैक एड्रेस, किसका मैक एड्रेस, जो यहाँ पे मेरे से दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड है, टाइप कैसे ओके लर्न हुआ है, सर। और यहाँ पे पोर्ट कौन कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो अभी तो कुछ भी ओके सर। नहीं है, सब कुछ ब्लैंक है। अभी हम पीसी पे जाते हैं, दोनों पीसी को हम आईपी दे देते हैं 10.0.0.1 और इस पीसी को 10.0.0.2, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क है ओके तो सर। नेटवर्क तो सेम रहेगा 10.0.0.2। टू। अब यहाँ से हम पिंग करेंगे पीसी 0 से पीसी 1 को। ओके सर। पिंग 10.0.0.2, रिप्लाई आया। अब हम जाके स्विच पे चेक करते हैं शो मैक एड्रेस। पहला कौन सा लर्न हुआ, F0 पे पीसी 0 का मैक एड्रेस कौन से विलेन में है, मेरा विलेन 1 में है। ठीक है, ओके बाय सर। डिफॉल्ट सारे मेरे पोर्ट विलेन 1 में ही होते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस डिवाइस का क्या है, ओके। पीसी का क्या है, वो यहाँ पे स्टोर हुआ है। और कैसे हुआ है, डायनेमिक हुआ है, कौन से पोर्ट से कनेक्टेड था, F0/1 से। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ये पीसी 1 का है मैक एड्रेस, और वो कौन से पोर्ट पे ओके सर। कनेक्टेड है, F0/2 पे। ओके सर। फर्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है, एड्रेस लर्निंग। एड्रेस लाइनिंग सर। Switch learns the source MAC address of frame and store the entry inside MAC table. The entry is saved inside MAC table along with VLAN 1 Prime store. type, dynamic or static, ओके सर। and port number. ओके, सो जो ओके डायनेमिक सर। मुझे मैक एड्रेस लर्न होता है उसका कुछ टाइम होता है, मैक्स मैक एजिंग टाइम। The time defines the age of dynamically learn inside CAM table. ओके सर। बाय डिफॉल्ट जो टाइम होता है 300 सेकेंड, मीन्स ओके 5 मिनट। ओके, ओके सर। मेरा नेक्स्ट क्या है, एक्शन फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग frame
After verifying the MAC address table, forwarding has multiple tabs. ओके, फर्स्ट जो टाइप है वो है फ्लडिंग. स्विच हैज रिसीव्ड अ फ्रेम with destination MAC address as broadcast. Okay, sir. Means सब कुछ FFFF डॉट FFFF डॉट FFFF रहेगा. ठीक है. स्विच Okay, bro. Okay, sir. forward the frame out all active port. This is called flooding. स्विच को क्या Okay, रिसीव sir. होगा? फ्रेम रिसीव होगा जिसका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो क्या रहेगा? ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट मीन्स क्या होता है? वन टू ऑल. तो स्विच भी क्या करेगा? जब उसको मैक एड्रेस रिसीव हुआ एज अ ब्रॉडकास्ट तो उसके जितने भी एक्टिव पोर्ट रहेंगे वो सब पे सेंड कर देगा. ठीक है. Okay, sir. इस Okay, sir. प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लडिंग. दूसरा हमारा है. Sir? हाँ, No, sir. No, sir. No. क्या हुआ? स्विच कुछ नहीं. हैज रिसीव्ड a frame with destination MAC address is unicast, but switch does not have any matchable entry inside MAC table. Then switch forward the frame out of all active port. ठीक है. स्विच को इस बार जो फ्रेम रिसीव हुआ वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो यूनिकास्ट था लेकिन उसका मैचेबल एंट्री किस में नहीं था? स्विच के मैक टेबल में नहीं था. फिर उससे इसने क्या किया? जितने भी उसके एक्टिव पोर्ट थे सब पे उसने सेंड कर दिया. ओके सर. थर्ड जो है यूनिकास्ट फ्लडिंग. स्विच हैज रिसीव्ड a frame with destination MAC address and switch has matchable entry inside MAC table. Then switch forward the frame out from single port. इस बार स्विच को क्या रिसीव हुआ? यूनिकास्ट मैक एड्रेस रिसीव हुआ और उसके पास मैचेबल एंट्री भी था तो उसने केवल सिंगल पोर्ट पे सेंड किया.
ओके सर। ठीक है पीयूष, हाँ जी सर। कोई डाउट? नहीं सर। थर्ड जो इसका है एक्शन वो है लूप अवॉइडेंस। स्विच अवॉइड लूप by default HTTP protocol is enabled on switch to avoid loop. HTTP keeps one link in forwarding state and put all other links in blocking state. ठीक है, ओके सर। अवॉइड लूप। ये थे मेरे स्विचिंग के ऑपरेशन। ठीक है, ओके सर। CDP, Cisco